everyone, and I think some of you already know me, and those who don't know, I am Simran, and today we are going to start Real Numbers Chapter 1. We are actually meeting after a long time, but I hope that we will be meeting for like till end. All right. So let's begin today, and math is as usual so wonderful. So let's start this wonderful maths. And for 10th class, we're going to do chapter number 1. So let's begin. So chapter number 1 is a real numbers. And I think you all know about numbers. बचपन से हमने numbers पढ़े हैं, right? So बहुत सारे different types के numbers हमने पढ़े हैं. तो कौन कौन से numbers हमने पढ़े हैं? Okay. So let's discuss that first. So let me make it bit bold. Yeah. तो बहुत सारे नंबर्स हमने पढ़े हैं. कौन कौन से नंबर्स हमने पढ़े हैं? फर्स्ट लेट्स डिस्कस दैट. सो हमने नंबर्स पढ़े हैं फर्स्ट एंड द इजीएस्ट वन दैट आर नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े हैं. नेचुरल नंबर ऑल दोज नंबर्स जो कि हम लोग काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं. लाइक इफ आई वांट टू काउंट एनीथिंग तो मैं क्या यूज कर रही हूँ? 1 2 3 4 5 6 all that numbers, right? They are natural numbers. Other type of numbers जो आपने पढ़े हैं that are whole numbers. Exactly, whole numbers. So prime numbers, composite numbers, right? Okay. Integers, exactly, integers भी हमने पढ़े हैं, right? Integers. What else? Exactly, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? Rational and irrational जो हमने क्लास 9th में ही पढ़े हैं. So we are having a rational number and irrational number, right? Don't bother my handwriting. I'll try to write bit like clear, right? All right. So we know about whole numbers. Natural numbers के बारे में पता है. जो हम सारे numbers हम लोग counting naturally अगर मैं count करूं तो जो numbers हम लोग counting के लिए use कर रहे हैं they are known as natural number. अगर मैं उन natural number family में एक और number add कर दूं that is zero, right? आर्यभट्टा आयन आर्यभट्टा gave the digit zero. तो इस natural number family में एक और number add हो गया that is zero, and then this family become whole number family. 0 1 2 3 4 5 6 7 all that numbers, right? They are whole numbers, right? We know about already. So then come to integers. Negative numbers नहीं पता थे हमको. whole number family में 0 तो add हो गया, but अभी भी negative numbers नहीं पता थे. When the negative numbers were introduced to us and now we know about the negative numbers also, now we got to know about the whole number family, right? Whole number, no, integer family. So we already know about these numbers. तो ये तो हमारे थे whole numbers, right? 5 6, right? बट इस फैमिली में जब नेगेटिव नंबर्स और ऐड हो गए हमारे, ऑल द नंबर्स दैट वी राइट ऑन द नंबर लाइन दे आर इंटीजर्स, राइट? देन वी गॉट नो अबाउट इंटीजर्स आल्सो. अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, प्राइम नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स जो कि दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, one and that number, right? Which have only two factors that are prime numbers. Prime, what is the meaning of the word prime? कभी सोचा आपने? Okay, if you know it, just write the answer in the chat box. अगर other words आपको पता है prime के, prime का मतलब होता है best, right? Prime subscription, right? So prime numbers are all those numbers that have only two factors, like 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है, 7 है, all the different numbers that we have, right? They are prime numbers. अगर बात करें composite numbers की, composite numbers are all those numbers जो prime नहीं है. For example, 4 है, 6 है, right? 8 है, 9 है, all that number, they are composite numbers जो prime नहीं है. But you might be wondering, like, one is either a prime nor a composite, right? It's neither a prime nor a composite number. It's a special number. Okay. One prime number की definition like that have only two factors. But does one have two factor? One का तो सिर्फ एक ही factor, that is one. So that's why one is neither a prime nor a composite one. फिर बात करते हैं रैशनल नंबर्स की. आई थिंक रैशनल नंबर्स यू ऑल नो अबाउट, जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. द नंबर दैट कैन रिटन इन द p by q फॉर्म, दैट are rational numbers, like 1 by 2, 3 by 4, all the numbers. And irrational number we also know about, that is like root 2, root 3, root 5, all that numbers that cannot be written in the p by q form, जो क्यों नहीं लिखे जाते, और that we gonna discuss actually in this chapter. So all that numbers
अब अगर इन सारे नंबर्स की मैं बात करूं, दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कम जिसके अंदर सब नंबर आ गए, राइट, द बिगेस्ट फैमिली लाइक दिस, अगर मैं पूरे इसकी बात करूं, लाइक ऑल दैट फैमिली दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, या दिस इज रियल नंबर, राइट। कोई भी नंबर की मैं बात करूं, कोई भी नंबर जिसको आप जानते हो, दैट्स अ रियल नंबर, राइट। So this is all about numbers. This is what we actually know about numbers. अगर किसी को कोई और नंबर पता है तो डेफिनेटली डू राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, किसी को कोई और नंबर अगर याद आ रहा है, so you can just write the answer in the chat box. Okay, so yes, so अगर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, so रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल एंड इरैशनल। फिर रैशनल नंबर्स में प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, राइट। सो यू माइट बी वंडरिंग, मैम इसमें प्राइम और कॉम्पोजिट नहीं है। प्राइम एंड कॉम्पोजिट आर इटसेल्फ नेचुरल नंबर, राइट। ओके, सो वो इसके अंदर आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली नो अबाउट नंबर्स। Okay, now let's move on to the chapter number 1, real number। क्या क्या चीजें हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। सो बेसिकली इस चैप्टर में आपको 3 चीजें पढ़नी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको आनी चाहिए, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट, ये आपको आनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो आपको आनी चाहिए इसके अंदर, दैट इज HCF and LCM, highest common factor and least common multiple. And the third thing that you must know is proving that the number is irrational. ठीक है, जिसके अंदर हमें प्रूफ्स निकालना है, प्रूफ करना है कि जो नंबर है वो रैशनल है, इरैशनल नहीं। बस अगर आपको ये चीजें आती हैं, देन दिस चैप्टर इज एक्चुअली डन। सो ये 3 चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है और यही चीज आपको सीखनी है। सो देयर इज एक्चुअली अ थ्योरम गिवन इन योर बुक। इफ यू जस्ट गो थ्रू दैट थ्योरम, प्राइम फैक्टराइजेशन, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? Let's talk about the first thing, that is prime factorization. What is this prime factorization? So there is a theorem given in your book. If you just see that, it is fundamental theorem of arithmetic. Let me make it a bit bigger for you. Yeah, it is fundamental theorem of arithmetic. ये कहती है every composite number can be expressed as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors are. So let's see what this theorem is actually saying. So अगर मैं कोई भी composite number लूं, that can be expressed as the product of prime. Okay, let's take a composite number. Suppose I take 12, right? 12 is a composite number. Now, if I just start doing the prime factorization of 12, I think you all know how to do the prime factorization. So let me write a number 12 and let's try to do the prime factorization of this number. So I'm having 12, right? Now 12 actually come in the 2's table, right? 2, 6, the 12, right? So 2, 3 the 6, right? 3, 1 the 3. If I just simply write the prime factors of this, that is 2, 2, and 3. So see, the prime factor that I have written, this number 2, 2, 3, they are actually the prime numbers. So all the composite numbers we talk about, they can be just as a prime. Okay. So now let's come to the exercise 1.1. जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. Let's discuss that. If you just see the exercise, so अगर आप अपनी बुक देखोगे, so in your book जो आपका फर्स्ट पॉइंट 1.1 एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो यही है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ prime factors. Express each number as a product of prime factor. Let me just write the same question here also. Yeah, so you have to express each number as a product of prime. So कोई भी नंबर लेते हैं हम लोग, सेकंड वाला पार्ट लेते हैं उसका. सेकंड वाला पार्ट जो है, that is a number 156. So let's take that. So let's find the prime factors of 156. So अच्छा, अगर आपको लग रहा हो ना कि ये नंबर डायरेक्टली किसी बिग नंबर से भी जा रहा है, डोंट ट्राई दैट, दैट कैन बी अ मिस्टेक. सो हमें हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना होता है. ओके, सो ऑलवेज टेक द प्राइम नंबर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम फैक्टर्स. नो, हमेशा प्राइम फैक्टर्स करने के लिए जस्ट यूज प्राइम नंबर्स. ओके,
So let's try it. So you have 156 प्राइम फैक्टर करते हैं. सबसे पहले नंबर किससे जा रहा है? आप मैम ये मत बोलना कि मैम ये डायरेक्टली 7 या 8 से जा रहा है. नो, वी कैन नॉट टेक 8 बिकॉज वो तो होना ही नहीं चाहिए ना. प्राइम प्राइम नंबर्स लेने हैं. दैट्स नॉट अ प्राइम. So let's take a simplest number. 2 से जा रहा है. That's an even number, right? So 2 sevens are 14, right? 2 sevens are 14. Oh, sorry, I was on mute. All right, तो अब ये बन गया 14 और ये जाएगा यहाँ से. ये बन गया हमारा 16. 16 2 8 जा 16, राइट? 2 8 जा 16 हो गया. सो अब फिर से देखेंगे. 2 जा रहा है यहाँ पर बिकॉज अगेन वी हैव इवन नंबर. सो 7 तो नहीं जाता, तो 2 6 आ जाएगा. 2 3 जा 6, 2 3 जा 6. अब ये देखो 6 ले लिया हमने. वी हैव 7 और वी जस्ट टेक आउट 6, तो हमारे पास 1 बच गया. दिस 1 विल अगेन मेक इट 18. सो अब 18 जाएगा. 2 9 जा 18, राइट? अब 39 is not an even number, so it will not go with 2, but it go with 3, right? So 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो जस्ट ऐड दिस नंबर, राइट? अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो डिविजिबल है. 3 1 3, 3 3 9, राइट? जाएगा 13 से. so 13 we are having 13 1 13. So this is a super easy way to just do the prime factorization. So if I just write 156, so I can just write 156 as 2 multiply 2 multiply 2 3 multiply 13, right? ऑर्डर एक्चुअली में मैटर नहीं करता, बट इफ यू जस्ट राइट द प्राइम नंबर. अगर मैं पहले 3 से भी इसको डिवाइड कर दूं या पहले 13 से भी कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट just use the prime number, right? You cannot see ma'am directly 4 से कर देते हैं, तो so that will not go, right? Just use the prime numbers. Okay, so I think that's a super easy way to do prime factors. अब आपको prime factor करने आगे होंगे. So there are 2 more questions that I think you can try now. All right, so let's move on to HCF and LCM. First of all, let's talk about HCF. First thing जो थी इसमें, I think वो हमें आ गई है, prime factorization, right? Now let's talk about HCF and LCM. So whatever it is, right? हमने I think सुना है इसको, पर ये होते क्या है? Let's talk about. Let's take 2 numbers. So मैंने एक number लिया 6 and other number लिया 8. अब मुझे फाइंड करने हैं इसके. Let's talk about HCF first, right? HCF. What this HCF stands for? This HCF stands for highest common factor, right? Let me write it for you. It is highest common factor. Yeah, highest common factor. Highest common factor होता क्या है? Let's write the factors of the number. Right? Factors हमने basically same prime factorization, right? So just keep writing the factors of this number. 6 के factors. 6 किस टेबल में आ रहा है? 6 1 के टेबल में आता है. 6 2 के टेबल में आता है. 6 3 के टेबल में आता है. 6 6 के भी टेबल में आता है. So these are all the prime factors. Factors of, not prime. These are the factors of a number 6, right? This number, this table में 6 आपको देखने को मिलेगा. That are the factors. So I'm just doing the factors. Let me write it for you. Right? So let's write the factors of 8 also. What are the different factors of 8? 8 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, and 8 आएगा आपका 8 के टेबल में, right? So, right. अब highest common factor, which is the common number, which is the common number that you can see, and the highest common number, I think that is 2. 2 is the highest common factor. So 2 is the HCF of this 8 and 6. Okay. So ये तो रही बात HCF की. HCF होता है highest common factor. Factors निकालो और तो उसमें highest common आ रहा है. Least common multiple. I'm just telling you ताकि आपको पता है हम क्या करते हैं. हम HCF और LCF निकालना सीख लेते हैं, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है, why we are doing like that we actually don't know. So वो चीजें आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है. जस्ट फाइंड द फैक्टर्स. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट नेम सेज, राइट? तो मैंने फैक्टर निकाले, उसमें से हाईएस्ट कॉमन निकाल लिया. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, लेट मी रेज इट अ बिट. So let's talk about least common multiples. LCM. Let me just write it again. It is least
common multiple. Least common multiple, basically multiples क्या होते हैं? कोई भी नंबर. Let's take this number same again, 6. Let's write the multiples. Multiples वो नंबर हैं अगर मैं 6 को repeatedly add करते जाऊं. 6 6 2 जा 6 times 3 6 times 4 6 like that. So 6 आएगा सबसे पहले तो. 6 times 2 then I'll get 12, right? 6 times 3 then I'll get 18. 6 times 4 then I'll get 24. 6 times 5 then I'll get 35. और भी लिख सकते हैं. It's infinite, right? सारे नहीं लिख रहे. So let's talk about 8 now. Let's talk about 8 now. So 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, right? Like that. लिखते जाओ. Infinite. Least common. कोई common number दिखा कोई इसमें से. Smallest, least common number. Least common. So exactly, I just saw it. So least common multiple, you can see if you write the multiples, it's the least common multiple. Right. So least common multiples of the 6 and 8 will be 24. बट ये मेथड हम लोग हर एक के साथ नहीं कर सकते बिकॉज अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है तो डेफिनेटली अब आप उसका टेबल तो लिखने नहीं बैठोगे, राइट? सो एलसीएम निकालने का भी एक सुपर इजी वे है. सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू डू इट. So if you want to find out the LCM and HCF of this, right? So for example, let me take the same number. So अपने same number लिए 6, I will just write the prime factorization of this number 6, and I'll just write the prime factorization of this number 8. Think we're using green pen. Like, let's do them the other. Okay, so let's write 2 3s are 6, right? 3 1, it's gone, right? Now let's talk about this. 2 4s are 8, 2 2s are 2 1s are, that's gone, right? Okay, so now let's write the prime factor. So 6 को अगर हम लिखें, so it will be 2 into 3, and 8 को अगर मैं लिखूं, that will be 2 multiply 2 multiply 2. So highest common factor, if you want to find the HCF, so highest common factor क्या होगा इनका? That you see a common number, that is 2. So highest common factor आ गया 2. Now if I talk about LCM, least common multiple, so जो HCF आया है, right, जो common table में आ रहा है उसको तो हम लिखेंगे one time. Because see, स्मॉल नंबर्स थे तो मैंने एलसीएम निकाल लिया ऐसे, राइट? बट अगर मेरे पास कोई बड़ा नंबर होगा ना, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन लाइक 105 and 72, now it will be difficult for you to just find the write the table of 105 and 72, right? वो भी अपने आप में एक टास्क है. सो वैसे हम लोग नहीं करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने एक बार ये लिखा HCF, दैट्स अ कॉमन नंबर है. अब जो नंबर बचे हैं ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द नंबर्स, आई जस्ट मल्टीप्लाई. सो 2 लिख दिया एक बार, बचा क्या है हमारे पास 3. सो आई राइट 3, बचा क्या है 2 2 2 2. If you just multiply now, you will actually get 24. Same answer, right? So HCF and LCM, right? So this is how you can actually do it. चलते हैं एक्सरसाइज पर. इफ यू जस्ट सी द क्वेश्चन, सो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो यही दे रखा है, फाइंड द HCF and LCM, right? So find the HCF and LCM. And so let me just show you the question, what it is saying. Oh, wait. So yeah, so it is here on the screen. So find the HCF and LCM of the following integers and verify LCM into HCF is a product of two numbers. So the question आपके पास given है, that is this one. So second question करते हैं हम लोग first आपके लिए. Okay, so I think you can do it. I'm leaving the easy one for you. Okay, so 510 and 92, right? So let's write the first. सबसे पहला काम when you have to do this, find the HCF and LCM. आपको आता है. So just first just do the prime factors. So prime factor करो 510 के. If you just do the prime factors, तो पहले नंबर जा रहा है 2 से. Sorry, why it's moving? Yeah. So 2 से गया ये number. So 2 2s are 4. Now what you get? Oh, 2 7s. Yeah. So ये आ गया 2 11, 2 5s are 10, 2 5 5, right? So now I think it's going with 5. So I can just choose 5, 5, 5s are 25, 51. So now I think it is going with 3. So 3 and it will be 3, 17, right? So I get 17, 1. Right. So करते हैं 92. Same way, I just took a number 92.
So 2 4s are 8, 2 6 are 12, right? 2 2s are 3s are 23 and 1, right? So this is what you get, right? अभी अगर मैं लिखूं प्राइम फैक्टराइजेशन, माय फर्स्ट थिंग इज टू जस्ट राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 510 के अगर हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं, दैट इज 2 3 5. आई एम जस्ट राइटिंग इन द ऑर्डर, राइट? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मैथ्स इज नॉट दैट इजी, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है एंड इट जस्ट ऑल हैपन. ओके, फिर उसके बाद ना कुछ लर्न करने की, कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना बस, फिर कुछ भी आ जाए ना, यू जस्ट नो नीड टू लाइक, रट्टे मारने वाली चीज नहीं होती है. सो इफ यू जस्ट सी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कैन यू सी 2 इज कॉमन. सो सिंपली आपने अभी सीखा, सो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा? एचसीएफ विल बी 2. और अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो सिंपल, मैंने एक 2 लिखा, बचा क्या क्या? 3 5 17. तो ऑर्डर में लिख लेते हैं. 2 बचा, ठीक है, ऊपर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23, राइट? जस्ट मल्टीप्लाई इट. Okay, whatever you get in, get as an answer, do write the answer in the chat box. So आपको LCM मिल जाएगा. So it will be something 4 or 5 digit number. So that will be the LCM. उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें, verify that the product of LCM and HCF is equal to product of two number. अगर मैं LCM और HCF को मल्टीप्लाई करूं, if I just multiply LCM and HCF, so let's do it. 2 multiply, आई थिंक मुझे नंबर बताना पड़ेगा, ये whatever is that, ठीक है, चेक कर लेना. ये नंबर और जो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वो नंबर, जस्ट पुट इट हियर एंड चेक क्या आंसर आ रहा है. एंड नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या थे मेरे पास? प्रोडक्ट टू नंबर्स. सो वन नंबर वाज, व्हाट वाज दैट? दैट वाज 5 10 and 92. 5 10 and 92. So if you just multiply this 5 10 and this 92, जो आपका आंसर आने वाला है ना, दैट विल बी एक्चुअली सेम. सो जो आपके पास आंसर आने वाला है, दैट विल बी, ओके, आई नॉट टेल यू, चेक इट. अगर मैंने ये बता दिया तो आपको ये पता चल जाएगा. ओके, जस्ट डू इट. ओके, सो वो सेम आएगा, ठीक है. अगर सेम नहीं आ रहा, सो आपकी कैलकुलेशन में कुछ एरर हो सकती है, अदरवाइज वो सेम आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट जो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी यहाँ पर. उसके बाद अगर आपको कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, आप सिंपल फॉर्मूला यूज करके उसको फाइंड कर सकते हो. उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आई थिंक दैट यू नीड टू नो. लेट मी जस्ट राइट इट हियर ऑन द स्क्रीन. Oh, sorry. Yeah. So question says that check whether 6 to the power n, ये एक्चुअली में पावर में था बट इसमें n शो कर रहा है, 6 to the power n, या ends with the digit 0. 6 to the power जो n है वो digit 0 के साथ end कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड. मीन 6 to the power 1, 6 to the power 2, 6 to the power 3, अगर मैं ये करते जाऊं ना, तो जो भी आंसर आएगा दैट एंड विद डिजिट 0. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 to the power 1 करूं, दैट विल बी 6. इट्स एक्चुअली नॉट एंडिंग विद डिजिट 0, सो ये आपका फॉल्स हो गया. 6 to the power 2 अगर मैं ये भी करूं, सो दैट विल बी 36, नॉट इवन एंडिंग विद डिजिट 0. 216, दैट इज नॉट इवन एंडिंग विद डिजिट 0. सो अगर मैं कुछ भी इसको करते हूँ 6 to the power n, तो ये डिजिट 0 के साथ एंड कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं है. चेक करना है हमें, मतलब इनकी बात को गलत प्रूव करना है सिर्फ. सो हाउ वी कैन एक्चुअली डू इट? So simple सा फंडा है. So how we can just do it? Yeah. So how we can just do it? अब कोई भी नंबर अगर जीरो के साथ एंड कर रहा है, अगर कोई भी नंबर जीरो के साथ एंड कर रहा है, तो वो डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होगा, राइट? सो हम लोग लिख देंगे इसको. ये आपको सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए लिखा था, क्वेश्चन में नहीं लिखना. सिंपल, इफ द नंबर एंड विद डिजिट 0, if the number end with digit 0, that is divisible by 10, right? Right. So हम लिख देंगे that should be divisible by 10. अगर कोई 10, मतलब 10 का मल्टीपल होगा, राइट? और जो सारे 10 के मल्टीपल्स होते हैं, इफ यू जस्ट सी द फैक्टर्स, उनके 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? टेक सम टाइम, थिंक ऑफ इट.
या 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, और अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, राइट? 2 और 5 होंगे। तो 10 के फैक्टर्स जो होंगे दैट विल बी 2 एंड 5। फाइन। सो 2 एंड 5। और अगर हम 6 टू द पावर n के फैक्टर्स को देखें, दैट इज 2 एंड 3, विल इट एक्चुअली वर्क? नो, राइट? अब फॉर एनी वैल्यू, अब ये जो 6 टू द पावर n है, इट इज डिविजिबल बाय 2, राइट? सो यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर ऐड कर देते हैं, डिविजिबल बाय 10, दैट इज, मतलब अगर डिविजिबल बाय 10 है तो इसको डिविजिबल बाय 2 एंड 3 दोनों से होना पड़ेगा, राइट? 2 एंड 5, सॉरी, 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। बट जो हमारा 6 टू द पावर n है, दैट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। जो हमारा 6 टू द पावर n है, ये डिविजिबल है बाय 2 बट नॉट divisible by 5, right? Therefore, 6 to the power n don't end with digit 0. अच्छा, एक चीज हमारी छूट गई जरा, लेट मी जस्ट टेल यू अगेन। अगर हमें 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, 3 नंबर्स, राइट, जो कि आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, अगर आपको 3 डिजिट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे? अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, लाइक इफ आई एम हैविंग 12, इफ आई एम हैविंग 15, इफ आई एम हैविंग 21, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर आपको 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालना है, सो हाउ यू एक्चुअली फाइंड आउट? सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या आएगा? 2 6 are 12, 2 3s are 3 1, right? You can just do it as a rough work, और यहाँ पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो 2 2 3, राइट? अगर मैं करूं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, सो 3 5 है, जस्ट डायरेक्ट नहीं, जरूरत नहीं है। सो 3 5 राइट? अगर मैं इसका भी करूं, सो 3 7 सा। आई थिंक HCF तो हमें मिल गया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपको मिल चुका है, दैट इज डिजिट 3, सो HCF हमारा आ गया 3। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द LCM, सेम थिंग, 3 को एक बार लिखो, क्या क्या बचा? 2 2 बचा, नॉट लाइक दैट, 2 2 बचा, 5 and 7, just multiply it and you will get the LCM, least common multiple, right? Okay, so हमने 3 चीजें इस चैप्टर में सीखनी थी। द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो टिक कर देते हैं, डन। फाइंड द HCF एंड LCM, डन। थर्ड थिंग इज प्रूफ। You have to prove that a particular given number is a rational or irrational. So ये हमारा जो था एक्सरसाइज 1.1 में इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो 1.1 देखोगे तो उसमें यही है। अगर 1.2 देखोगे तो उसके अंदर ये आपको देखेंगे प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है। सो जस्ट डू इट, ओके? I'll help you out, right? अकेले नहीं करोगे, okay? So just let's do it. So if you just see the exercise 1.2, जो कि आपकी NCERT में गिवन है, सो इफ यू जस्ट सी दैट, तो अगर आपको उसमें देखोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे। लेट मी जस्ट इवन शो इट टू यू। सो यस, या, सो फर्स्ट क्वेश्चन में है, प्रूफ दैट अ गिवन नंबर इज इरैशनल। प्रूफ करना है आपको कि कोई गिवन नंबर है, इरैशनल है। सो लेट मी जस्ट शो यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रूट 2 को ही प्रूफ करते हैं, okay, चलो रूट 2 को प्रूफ करते हैं। ये तो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आप देखोगे तो। लेट मी जस्ट शेयर इट टू यू ऑन द स्क्रीन। It is not written root. Let me write it for you. So जो क्वेश्चन है वो आपको ये कहता है, प्रूफ करना है आपको रूट 2
इज इररेशनल। अब कैसे प्रूव करना है? एक्चुअल में ये नंबर इररेशनल है, बट प्रूव करना इज एक्चुअली अ टास्क। हमें इसको प्रूव करना है कि इररेशनल है। सो हम लोग कुछ नहीं करने वाले, हम लोग एक्चुअली एक्सेप्ट करने वाले हैं कि जो ये क्वेश्चन है ये रैशनल है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो हम लोग मानने वाले हैं दैट लेट √2 इज रैशनल। √2 जो है हमारा वो रैशनल नंबर है। √2 रैशनल है, हम ये मान लेंगे कि अगर √2 रैशनल है तो √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ p/q फॉर्म, राइट? p/q फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। एंड p/q, जो p एंड q है, दे आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स का मतलब है इनके अंदर को प्राइम्स क्या होते हैं? p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है ये आपस में प्राइम नंबर्स है, मतलब इनके बीच में आपस में वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू हिंट, इफ आई गिव यू लाइक, इफ आई जस्ट टेल यू लाइक 2, राइट? 2 इज एक्चुअली अ प्राइम। 2 एंड 1 फैक्टर है। अगर मैं एक और ऐसा नंबर लिखूं जो प्राइम नहीं है, लाइक 9, राइट? अब 9 एक्चुअली में प्राइम नहीं है, बट अगर मैं 9 के फैक्टर्स लिखूं, दैट इज 3, 3, 1, तो इनके बीच में आपको कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 दिख रहा है। दे आर नॉट प्राइम। 2 इज प्राइम, बट 9 इज नॉट अ प्राइम। बट स्टिल ये नंबर के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दे आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर्स, दैट्स व्हाई दे आर को प्राइम। सो पी एंड क्यू आर को प्राइम, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जो दोनों किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है बेसिकली। ओके, मान लिया हमने। सो अब हम क्या कर सकते हैं? हमने क्या किया, क्यू को उधर ले गए हम। सो लेट्स टेक क्यू हियर, √2 p, right? Now squaring both side, let's do squaring both side। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमारे पास ये आ गया q √2 and इधर p square, right? So if I just simply solve it तो ये हो गया q square 2q square p square, right? So अब ये हो गया। So अभी हम क्या करेंगे, अगर p square is 2q square है, 2 into something आ रहा है, so 2 will definitely divide p square, simple। 2 will definitely divide p square. Yeah, if either I can say like p square is divisible by 2, right? So हमारा p square है जो divisible by 2 है। p square is divisible by 2, right? p square divisible है तो p भी divisible होगा, दोनों divisible है। ओके, हो गया। अगर ये दोनों divisible है, अगर p square divisible है, सॉरी, अगर p भी divisible है, so p can be expressed as okay, let me write it here, so आपको थोड़ा सा easy हो जाएगा ना अंडरस्टैंड करना। Let me make it bit small, yeah, I think that will be fine। So p स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल हो गया, दैट्स फाइन। सो अभी हम यहीं पर लिख देते हैं, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इजिली। सो हम लोग p को एक्सप्रेस कर सकते हैं विद मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, लाइक राइट दिस। डिविजिबल है, अगर लाइक 20 है, डिविजिबल है 2 से, सो आई कैन राइट दैट 20 एज 2 into समथिंग, ना 2 into 10। अगर 12 है, 12 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल, लाइक 2 into समथिंग, 2 into 3, 2 into 6, राइट? 6 है, मल्टीपल है, डिविजिबल है 2 से, आई कैन एक्सप्रेस इट एज 2 × 3। सो हम इसको किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर c इज c इज इंटीजर, राइट? यहाँ पे c आपका इंटीजर है। सो ये हो गया। सो अभी अगर ये है और हमारे पास इक्वेशन क्या थी स्टार्टिंग जहां से हुई थी, दैट इज 2q स्क्वायर इज p स्क्वायर, राइट? अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं इसकी, सो इट विल बिकम 2 दिस, सिंपल। ये हो गया 2q स्क्वायर और यहां पर हो गया 4c स्क्वायर।
इसको अगर सॉल्व करूं सो क्यू स्क्वायर विल बी 2c², 4 डिवाइडेड बाय हो गया ना 2, सो दैट विल बी एक्चुअली 2। अब अगर ये भी सेम ऐसा ही आ गया 2 इंटू समथिंग अदर नंबर, सो आई थिंक क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 हो गया। क्यू स्क्वायर ही नहीं, यू कैन जस्ट से इट एज लाइक क्यू इज डिविजिबल बाय 2। हमने ऊपर क्या बात की थी कि दे आर को प्राइम, मीन्स इनका कोई कॉमन डिविजिबल नहीं है, किसी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे हैं। बट नाउ वी हैव एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टेड आवर स्टेटमेंट दैट क्यू पीस भी जो था वो भी 2 के टेबल में आ रहा है, क्यू था वो भी 2 के टेबल में आ रहा है, सो वी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। सो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, अभी मैं यहां पर लिख देती हूँ, विच इज द contradiction to the fact that P and Q are coprime. Therefore, the root 2 is irrational. कोई भी नंबर होगा, जैसे अगर आपको रूट 2 की जगह यहाँ पे रूट 3 दे रखा है, सेम थिंग, रूट 2 की जगह रूट 3 दे रखा है तो आपको सेम चीज करनी है, यहाँ पर रूट थ्री सेम, दैट इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, जहां पर ये हम करते गए, फिर उस नंबर p को डिविजिबल बाय 3 हमने प्रूव कर दिया, q को भी डिविजिबल बाय 3 कर दो एंड इट्स डन। अगर आपको रूट 5 करना है ऐसी, राइट, अगर मुझे रूट 5 करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल, यहां पर हम 5 को लेकर चलेंगे, यहां पर हम 5 को लेकर चलेंगे, इसको डिविजिबल बाय p² को डिविजिबल बाय 5 हमने एक बार प्रूव कर दिया, q² को डिविजिबल बाय 5 कर दिया, इधर भी इधर भी, सो फिर भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, सेम नंबर से डिविजिबल हो गए। सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करने हैं और कुछ नहीं करना। ओके, अब आपके पास कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, लाइक एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपको स्टेटमेंट को प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट गो टू द टेक्स्ट बुक, सो अगर आपको टेक्स्ट बुक में जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, लेट मी जस्ट टेल यू विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो 3 + 2√5 जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, या ये वाला क्वेश्चन, या आई थिंक आई हैव टू राइट इट। क्वेश्चन है आपका, लेट मी मेक स्पेस, क्वेश्चन है आपका ये वाला, 3 + 2√5 लिखने की जगह दे दो भाई, 3 + 2√5 जो आपका है वो इरेशनल है, तो सिंपल कुछ नहीं करना हमें। सो 3 प्लस लेट कर लो इसको, 3 + 2√5 बी रैशनल। अब ये रैशनल है, सो रैशनल है तो अगेन इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ p/q फॉर्म, सेम वेयर p and q आर को-प्राइम्स। ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, ओके, वेयर p and q are co-primes, ओके, वेयर p and q are co-primes। सो अभी इसको अगर देखें, सो इट विल बी 3 + 2√5 इज p/q है, इसको यहां से हम लोग भेज देते हैं अदर साइड, सो ये हमारा आ गया हेयर। नाउ योर √5 इज 1/2 p/q3, राइट, इधर आ गया, इट वॉज इन मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ गया डिवाइड में। नाउ नाउ स्टोरी बिगिंस, सी, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, सो 1/2 इज प्राइम, सॉरी इज रैशनल, राइट। अगर हम इसको देखें, p/q-3 अगेन इज रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो इसके इक्वल में जो होगा दैट इज रैशनल, दैट इज रैशनल।
प्राइम का इक्वल प्राइम, कॉम्पोजिट का इक्वल कॉम्पोजिट, नंबर का इक्वल नंबर. So that should be prime, rational. If this is rational, this is rational, it should be rational. But root 5 is irrational. Root 5 is irrational. अगर ये irrational है, therefore 3 plus 2 root 5 uh, should be rational, should be irrational. Hence, our contradiction is wrong. Done? So, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 इतना ही था. सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है. अगर आपको कुछ और चीजें ऐड करनी है, आपको कुछ लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ हमें और भी चीजें ऐड करनी है, क्वेश्चंस एंड ऑल कुछ भी है, सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. कुछ भी और एक्स्ट्रा आप चाहते हो कि कोई टॉपिक जो आपको पर्टिकुलर नहीं समझ में आया, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो just do let me know in the comment section, and I hope you will show more and more love. I'm hoping for that. So now thank you for joining. ये था हमारा चैप्टर 1. 3 चीजें आपको समझ रही थी. द फर्स्ट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और प्रूफ कैसे करते हैं, राइट. सो अब कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हो, राइट. तो बस यही करना है आपको, उसको इरेशनल प्रूफ करना है, उसको रैशनल बताना है, देन उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देनी है. सो सॉरी, मैंने दो, our assumption is wrong, right? Instead of contradiction, write assumption. Contradiction or wrong to contradictory, like same words for you, so I can write. So our assumption is wrong. All right. So see you in the next session. See you soon. Till then, bye bye. Take care. Enjoy your day. Enjoy maths.